बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अक्सर्स मिनी किचन। आज हम बनाएंगे इफ्तारी के लिए शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए मुझे चाहिए चिकन, गार्लिक और चना दाल, रेड चिली, गरम मसाला, चिली फ्लेक, सॉल्ट और ज़ीरा। लेमन जूस, अनियन, टमाटो, ग्रीन चिली और एग। शाबाश। अब मैं गार्डन में जा रही हूँ मिंट लेने। अब मैं कबाब बनाऊंगी। एक पैन मैंने ले लिया। अब मैं सारी चीजें डालूंगी। अब मैं मसाला डालूंगी। और पानी डालूंगी और मिक्स कर लूंगी। अब मैं दाल और चिकन को कर लूंगी। अब मैं अनियन चॉप कर लूंगी। मैं टमाटर चॉप कर लूंगी। अब मैं ग्रीन चिली काट लूंगी। दाल और चिकन कुक हो गए। अब मैं ग्राइंड कर लूंगी। अब मैं दाल और चिकन को ग्राइंड कर लूंगी। मिक्सर रेडी है। अब मैं छोटे छोटे कबाब बनाऊंगी।
कबाब सारे रेडी हैं, अब मैं फ्राई कर लूँगी। कबाब मैंने फ्राई कर ली है, अब मैं अब मैं एक साइड से पक के अब मैं साइड चेंज कर लूँगी। अब मैं निकाल लूँगी। कबाब रेडी, अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी। कबाब बहुत यम्मी से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।